Hello everyone, welcome to Let's Learn CS Hub. I hope you all are doing well. Today we will discuss top 100 fill in the blanks with answers of class 11 computer science. Okay, so start करिबा हमरो फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर कौन थिला? कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो थरे अछि केते क्वेश्चंस 1 to 25 क्वेश्चंस. ओके, सो स्टार्ट करिबा. फर्स्ट क्वेश्चन कोन? ए कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस. कंप्यूटर को डिवाइस? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डैश. रॉ फैक्ट आ फिगर को आम कौन कहू? डेटा बोली कहू. बुझिपार? नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ प्रोसेस्ड डेटा. प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डैश. प्रोसेस्ड डेटा को आम कौन कहू? इनफॉरमेशन बोली कहू. यस और नो? सो आंसर हूँ इनफॉरमेशन. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. द आईपीओ साइकिल स्टैंड्स फॉर. द आईपीओ साइकिल स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस एंड डैश. आम पढ़ी आईपीओ साइकिल रे, हाँ कि नहीं? आई हूँ आमर इनपुट, पी हूँ प्रोसेस एंड ओ हूँ व्हाट? आउटपुट. गॉट इट? नेक्स्ट हूँ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश. फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर को आम कौन कहू? हार्डवेयर बोली कहू. ओके, आम बेसिक्स क्लास रे आम आपको पढ़ी, हाँ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड डैश. ए सेट ऑफ प्रोग्राम को आम कौन कहू? सॉफ्टवेयर बोली कहू. बुझिपार ना बुझिपारनी? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ओके, प्रोग्राम कौन कही? प्रोग्राम हूँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. बुझिपार? तापर जीवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड डैश. जो सॉफ्टवेयर कौन करे? कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करे, ताको आम कौन कहू? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड डैश. कौन तार आंसर? तार आंसर हूँ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द व्हाट? सीपीयू. सीपीयू रो फुल फॉर्म कौन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू को आम आउ कौन कहू? कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट बोली भी कहू. बुझिपार? तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. देखो यार फुल फॉर्म आसला अगेन. सीपीयू स्टैंड्स फॉर डैश. सीपीयू रो फुल फॉर्म हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. बुझेला? नेक्स्ट क्वेश्चन. एएलयू स्टैंड्स फॉर. एएलयू रो फुल फॉर्म कौन? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. बुझेला? नेक्स्ट सीयू. सीयू स्टैंड्स फॉर व्हाट? कंट्रोल यूनिट. गॉट इट? नेक्स्ट द एएलयू परफॉर्म्स डैश एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. एलयू माने कौन? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स डैश एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. कौन? आंसर हूँ अरिथमेटिक. क्लियर? नेक्स्ट हूँ द सीयू कंट्रोल्स ऑल डैश ऑफ द कंप्यूटर. सीयू कौन कंट्रोल करे? सीयू कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, मेमोरी डायरेक्टली एसेस्ड बाय द सीपीयू इज कॉल्ड डैश मेमोरी. जो मेमोरी डायरेक्टली एसेस करे बाय द सीपीयू ताको आम कौन कहू? प्राइमरी मेमोरी बोली कहू. बुझेला? तापर जीवा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी? परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड डैश. परमानेंट स्टोरेज डिवाइस को आम कौन कहू? को मेमोरी बोली आम कहू? आम ताको सेकेंडरी मेमोरी बोली कहू. ओके, नेक्स्ट कौन क्वेश्चन? रैम स्टैंड्स फॉर. रैम स्टैंड्स फॉर व्हाट? रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, तापर नेक्स्ट हूँ रोम. रोम स्टैंड्स फॉर व्हाट? रीड ओनली मेमोरी. ओके, एगुड़ाक बहुत इजी क्वेश्चन गुड़ाक. ओके, नेक्स्ट आसला आमर कौन? रैम इज डैश मेमोरी. रैम माने कौन? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरीटा आमर कौन? को मेमोरी बोली से कहूँ. कौन हम आंसर? आंसर हूँ वोलाटाइल मेमोरी. सिमिलारली रोम कौन? रोम इज डैश मेमोरी. रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी. ओके, आ गोटे पॉइंट ये मन रख. रैम हूँ आमर कौन? टेम्पररी और रोम हूँ व्हाट? परमानेंट. बुझेला? तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? कैश मेमोरी इज डैश देन रैम. कैश मेमोरीटा सब कौन? फास्टर देन रैम, हाँ कि नहीं? सो कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, नेक्स्ट आसला द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज डैश. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कौन? बीट. बीट माने कौन जानछ ना? बाइनरी डिजिट, जो कि आमर आसीजिव कौन कौन? 0 आउ 1. बुझेला? तापर नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 बिट्स मेक 1 डैश. 8टा बिट मिसिले कौन हुए? 1 बाइट. माने गोटे बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 1 KB इक्वल्स टू डैश बाइट. गोटे किलो बाइटा केते बाइट बोली पचार. केते बाइट हम? 1024 बाइट, हाँ कि नहीं? सो 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स. सिमिलारली 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू डैश किलोबाइट. गोटे मेगाबाइट केते किलोबाइट हम? 1024 किलोबाइट. ओके, एबे हम चैप्टर 1 कंप्लीट कले. तापर जीवा आमे नेक्स्ट चैप्टर को जार ना हूँ नंबर सिस्टम. ओके, नंबर सिस्टम एंड एनकोडिंग. तार किछि इंपोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स आमे एबे
डिस्कसन करबा ओके फर्स्ट क्वेश्चन हो यार कोन बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस डैश बाइनरी नंबर रो बेस केते 2 काहे ना बाइनरी नंबर हमर कोन नंबर अछि टोटल होची 2 कोन 0 और 1 सो तार बेस वैल्यू केते हैला 2 बुझेला सिमिलरली हमर डेसिमल नंबर सिस्टम रे कोन हबो डेसिमल नंबर रे हमर केतना नंबर अछि कमेंट करो तमे डेसिमल नंबर रे कोन अछि नंबर्स गुडा को तमे कमेंट करो तार बेस वैल्यू केते 10 सिमिलरली ऑक्टल नंबर सिस्टम रे बेस केते हबो 8 काहे ना तार टोटल नंबर होची 8 बुझेला तापर आ गुटे क्वेश्चन होची हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रे बेस केते हबो तार टोटल नंबर केते थिला 16 सो आंसर हबो 16 तमे कमेंट करो बाइनरी डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर कोन नंबर अछि तमे ताको कमेंट करो ओके तापर नेक्स्ट होची बाइनरी नंबर यूज ओनली डैश एंड डैश बाइनरी नंबर यूज को नंबर यूज करे 0 और 1 बुझेला तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द हेक्साडेसिमल डिजिट आफ्टर 9 इज डैश 9 पर नेक्स्ट नंबर कौन आसे 10 सो 10 होची हमर कोन ए बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची आस्की स्टैंड्स फॉर ASC डबल आई स्टैंड्स फॉर व्हाट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉरमेशन इंटरचेंज ये आ गोटे मुझे आ गोटे हूँ ASC डबल आई आ गोटे हूँ ISC डबल आई जदि ASC डबल आई आसला ए आसला माने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉरमेशन इंटरचेंज जदि आम ISC डबल आई आसता से कौन होता इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉरमेशन इंटरचेंज क्लियर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ यूनिकोड इज ए डैश एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूनिकोडटा कौन कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एटा भी इंपोर्टेंट बहुत एग्जाम रे आछि वन निबल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स गोटे निबल केते बिट बोली पचाछ केते बिट 4 बिट्स माने 4 बिट्स ओके नेक्स्ट आसला क्वेश्चन रिपीट हेची वन बाइट कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स गोटे बाइटटा केते बिट बोली पचाछ केते बिट हबो 8 बिट्स ओके तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 5 बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 5 केते हबो 101 याको तमे कैलकुलेशन करके लिखिबो ओके यार दि तीनटा क्वेश्चन तमे देखियो पाइबो सिमिलरली डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1000 इज डैश केते हबो 8 तमे जते बेला को कन्वर्ट करिवो कैलकुलेशन करिवो सेते बेला तमर आंसर आसीबो केते 8 ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची 1 GB इक्वल्स टू डैश मेगाबाइट गोटे गीगाबाइट केते मेगाबाइट हबो 1024 मेगाबाइट हो कि नहीं तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 टेराबाइट इक्वल्स टू डैश गीगाबाइट गोटे टेराबाइट केते गीगाबाइट हबो 1024 गीगाबाइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिकोड सपोर्ट्स डैश लैंग्वेज यूनिकोडटा को लैंग्वेज सपोर्ट करे को लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस ओके बुझेला तापर जीवा हम नेक्स्ट टॉपिक होची हमर कोन पाइथन बेसिक्स माने पाइथन बेसिक्स रे हम किछ क्वेश्चन देखिबा 41 टू 65 तारो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम एबे डिस्कशन करिबा फर्स्ट क्वेश्चन होची पाइथन इज ए डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन टा हमर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन होची हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पाइथन इज एन डैश लैंग्वेज पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड ए डैश द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम का कौन कहू टोकन बोली कहू ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन आर कॉल्ड डैश रिजर्व वर्ड को पाइथन रे हम कौन कहू कीवर्ड बोली कहू ओके बेले बेले एग्जाम रे एक्सप्लेन कीवर्ड कौन कीवर्ड होची रिजर्व वर्ड को हम कौन कहू कीवर्ड बोली कहू ओके तापर नेक्स्ट आसला कौन नेम्स गिवन टू वेरिएबल आर कॉल्ड डैश तार ना होची कौन आइडेंटिफायर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स्ड वैल्यू इन पाइथन आर कॉल्ड डैश पाइथन रे हमें फिक्स्ड वैल्यू को हमें कौन कहू लिटरल बोली कहू ओके फिक्स्ड वैल्यू इन पाइथन आर कॉल्ड लिटरल्स बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल स्टोर डैश वेरिएबल कौन स्टोर करे सब बोले डेटा स्टोर करे हाँ कि नहीं सो वेरिएबल स्टोर डेटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द असाइनमेंट ऑपरेटर इज डैश असाइनमेंट ऑपरेटर कोडा असाइनमेंट ऑपरेटर होची हमरो इक्वल्स टू सिंबल बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट को एक्सेप्ट करिबारे हम को फंक्शन यूज करू तार ना होची इनपुट फंक्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट जते बेले हमें आउटपुट डिस्प्ले करबा पई को फंक्शन यूज करू प्रिंट फंक्शन यूज करू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप द फंक्शन यूज टू फाइंड द डेटा टाइप इज डैश डेटा टाइप बाहर करिया पई हम को फंक्शन यूज करू टाइप फंक्शन यूज करू को फंक्शन टाइप फंक्शन बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर जते बेले हमें कौन करू इंटीजर को कन्वर्ट करिया पई को फंक्शन यूज करू इंट फंक्शन ओके इंट फंक्शन बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट इनटू फ्लोट देखो इंट रे जते बेले हम इंटीजर को कन्वर्ट करछन इंट फंक्शन करछन जदी हमें फ्लोट करिबा
फ्लोट को आम कन्वर्ट करवा से आम को फंक्शन यूज करवा फ्लोट फंक्शन यूज करवा सिमिलरली जदि आम स्ट्रिंग करवा माने द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग जो आम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवा से आम str फंक्शन यूज करवा आम कौन कहू स्ट्रिंग फंक्शन बोली कह बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट इनटू बुलियन इज डैश द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट इनटू बुलियन इज बुलियन फंक्शन माने BOOL फंक्शन बुझेला नेक्स्ट पाइथन इज डैश सेंसिटिव पाइथन टा हमर कोन केन सेंसिटिव हो कि नहीं सो पाइथन इज केस सेंसिटिव क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिंगल लाइन कमेंट बिगिन्स विथ डैश सिंगल लाइन कमेंट्स कोड स्टार्ट हुए हमर हाश कोड रु स्टार्ट ओके सो ए सिंगल लाइन कमेंट्स बिगिन विथ व्हिच सिंबल हाश सिंबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर्स विथआउट डेसिमल पॉइंट बिलोंग्स टू द डैश डेटा टाइप नंबर्स विथआउट डेसिमल पॉइंट्स माने हमर कोन इंट डेटा टाइप ओके नेक्स्ट होची नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट्स बिलोंग्स टू द डैश डेटा टाइप नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट्स बिलोंग्स टू को डेटा टाइप हो ये होची हमर कोन फ्लोट बुझले जदि विथआउट अच्छी इंट जदि विथ डेसिमल पॉइंट्स अच्छी ताहले कोन हबा हमर फ्लोट आको भलसे मन रखिबो बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट इज स्टोर्ड यूजिंग द डैश डेटा टाइप टेक्स्ट डामर कोड स्टोर हो को डेटा टाइप रे स्टोर होई रहउछ स्ट्रिंग रे सो एटी आंसर लिखिबो कोन स्ट्रिंग डेटा टाइप बुझेला तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रू एंड फॉल्स बिलोंग्स टू द डैश डेटा टाइप ट्रू फॉल्स टा हमर कोड आसे हमर बुलियन ट्रू फॉल्स आसिला माने बुलियन काहे बुलियन रे हमर कोन अछि 0 1 0 होची हमर कोन फॉल्स 1 होची ट्रू बुझेला ए लिस्ट इज ए डैश डेटा टाइप लिस्ट डामर कोन म्यूटेबल ना इम्यूटेबल लिस्ट होची म्यूटेबल काहे ना ताको कोन चेंज करि परिबा सो लिस्ट इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप ओके नेक्स्ट होची टपल टपल डामर कोन इम्यूटेबल सो टपल इज ए डैश डेटा टाइप इम्यूटेबल डेटा टाइप बुझेला तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन ए डिक्शनरी स्टोर्स डेटा एज डैश वैल्यू पेयर्स डिक्शनरी आसला माने कोन की सहित वैल्यू पेयर माने की हाइपन वैल्यू पेयर अदरवाइज की कोलन वैल्यू पेयर बोली भी तमे ताको लिखि परिबो बुझेला से कौन स्टोर करे की सहित वैल्यू बुझेला तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेट स्टोर्स डैश एलिमेंट्स ओनली सेट डामर कौन स्टोर करे ओनली यूनिक एलिमेंट्स ओके सो इट सेट स्टोर्स व्हाट यूनिक एलिमेंट्स ओनली बुझेला तबरे जीवा हमें कौन नेक्स्ट टॉपिक को जार ना होज कौन ऑपरेटर फ्लो कंट्रोल एंड स्ट्रिंग जो हमें कंप्लीट करबा कोठो को जाई 66 टू 100 बुझेला फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा द एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इज डैश एक्सपोनेंट माने कोन ये हो हमर पावर माने इट कोन आसीबा हमर डबल स्टार ओके सो द एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इज व्हाट डबल स्टार बुझेला तापर नेक्स्ट आसला द फ्लो डिवीजन ऑपरेटर इज डैश फ्लो डिवीजन ऑपरेटर आसला माने कोन हमर डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल डिवीजन आसला माने कोन हमें ताको कोन करबा डिवाइड करबा डबल डिवीजन आसला माने से हो हमर कोन फ्लो डिवीजन बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द रिमाइंडर ऑपरेटर इज डैश द रिमाइंडर ऑपरेटर माने हमर कोन परसेंटेज सिंबल बुझेला तापर नेक्स्ट होची इक्वालिटी इज चेक्ड यूजिंग डैश इक्वालिटी जते बेला हमें चेक करू सेते बेला हमें को सिंबल यूज करू डबल इक्वल्स टू बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट इक्वल्स टू इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश नॉट इक्वल्स टू को हमें केमिति रिप्रेजेंट करू फर्स्ट को सिंबल नॉट इक्वल्स टू ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेटर देन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेटर देन तो जानछो ग्रेटर देन हमर को सिंबल ग्रेटर देन सिंबल हो कि नहीं सिमिलरली लेस देन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट लेस देन होची हमर लेस देन सिंबल बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉजिकल ऑपरेटर रिक्वायरिंग बोथ कंडीशन टू बी ट्रू जते बेला हमर बोथ कंडीशन ट्रू है सेते बेला हमर को ऑपरेटर हमें यूज करू ये होची हमर एंड ऑपरेटर बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉजिकल ऑपरेटर रिक्वायरिंग एटलीस्ट वन कंडीशन टू बी ट्रू एटलीस्ट वन कंडीशन आसला माने हमर कोन और बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉजिकल ऑपरेटर दैट रिवर्सेस ए कंडीशन इज डैश रिवर्स ए कंडीशन आसला माने कोन नॉट काहे कि ना एठी हमर कोन हुए 0 थिले 1 और 1 थिले 0 बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द मेंबरशिप ऑपरेटर यूज्ड टू चेक एक्जिस्टेंस मेंबरशिप ऑपरेटर यूज्ड टू चेक एक्जिस्टेंस माने जदि अच्छी ताहले कोन हबो सी होची हमर कोऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर हमर कोन अछि दुटा अछि इन और नॉट इन सो इट कोन हबो चेक एक्जिस्टेंस ता माने इट कोन हबो इन ऑपरेटर ओके तापर नेक्स्ट होची द आइडेंटिटी ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर माने कोन इज और नॉट इज अछि तो आइडेंटिटी ऑपरेटर इज कोन इज बुझेला तापर नेक्स्ट होची डेटा टाइप कन्वर्सन इज कॉल्ड डैश डेटा टाइप हम जते बेले कोन करू कन्वर्सन करू सेते बेले हम ताको कोन कहू टाइप कास्टिंग बोली कहू एटा हमर बहुत इंपोर्टेंट याको भलसे मन रखिबो बुझेला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग इज डन यूजिंग द डैश स्टेटमेंट जते बेले हम किछि भी डिसीजन नो सेते बेले हम को स्टेटमेंट यूज करू इफ स्टेटमेंट ओके सो डिसीजन मेकिंग इज डन यूजिंग द
if statement. Clear? Next question. Multiple conditions are checked using this. Multiple conditions ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁ? if, elif ଆଉ else. Okay, ମାନେ more than one condition. ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ next question. The loop commonly used with range. ଯେତେବେଳେ ଆମେ range function ୟୁଜ୍ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ ଲୁପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ? कमनली आम कौ लूप यूज करूँ से आम फॉर लूप यूज करूँ बुझेगा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द रेंज फंक्शन जनरेट्स ए सीक्वेंस ऑफ डेस व्हाट नंबर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द डेस स्टेटमेंट टर्मिनेट्स ए लूप इमीडिएटली को स्टेटमेंट करे टर्मिनेट करे ब्रेक स्टेटमेंट ओके बुझेगा कि बुझेगा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द डेस स्टेटमेंट स्कीप द करेंट इटरेशन डेस स्टेटमेंट स्कीप्स द करेंट इटरेशन आंसर कौन कंटिन्यू स्टेटमेंट ओके नहीं तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ए लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड ए डेस लूप नेस्टेड लूप बुझेला ए लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ डेस स्ट्रिंगटा कौन स्ट्रिंगटा हूँ आम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हाँ कि नहीं सो ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बुझला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग इज डेस द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग आमर कौन 0 जो थे आम कौटू कौटी को जाऊ लेफ्ट टू राइट जिते आम लेफ्ट टू राइट जावा से आम कौन जावा 0 टू स्टार्ट हम और जिते आम राइट टू लेफ्ट जावा ताहले आमर कौटू स्टार्ट हम -1 टू स्टार्ट हम बुझेगा जदि लास्ट होता ताहले कौन होता -1 होता बुझेगा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो से क्वेश्चन रेडी अच्छी द लास्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग कैन बी एसेस्ड यूजिंग इंडेक्स व्हाट आंसर हम -1 बुझेगा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग्स आर डेस इन पाइथन स्ट्रिंगटा कौन इम्यूटेबल सो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन द built-in function used to find the length of a string is this the built-in function used to find the length जेतेबेले आमे लेंथ बाहर करू सेतेबेले आमे को फंक्शन यूज करू लेंथ फंक्शन माने लेंथ फंक्शन यूज करू लेंथ होची हमर कोन built-in function ओके नेक्स्ट होची द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस टेक्स्ट टू किसी भी टेक्स्ट को आम जिते अपर केस को कन्वर्ट करवा से आम को फंक्शन यूज करवा अपर फंक्शन यूज करवा सिमिलरली जदि आम कौन करवा तो फंक्शन यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस आम जिते कन्वर्ट करवा से आम को फंक्शन यूज करवा लोअर फंक्शन यूज करवा बुझेगा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग को आम कौन कहू स्लाइसिंग बोली कहू बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन द रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड डेस रीयूजेबल ब्लॉक को आम कौन कहू फंक्शन बोली कहू बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द कीवर्ड फंक्शन को आम कौ कीवर्ड डिफाइन करूँ डेफ कीवर्ड कीवर्ड करूँ डेफ कीवर्ड आम कौन करूँ डिफाइन करूँ तो तार आंसर हो कौन डेफ कीवर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कीवर्ड यूज्ड टू रिटर्न ए वैल्यू इज डैश द कीवर्ड यूज टू रिटर्न ए वैल्यू आम किसी वैल्यू रिटर्न करने फंक्शन आम कौन यूज करूँ कौ कीवर्ड यूज करूँ रिटर्न कीवर्ड यूज करूँ बुझेगा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रन टाइम एरर आर कॉल्ड डैश रन टाइम एरर को आम कौन कहू एक्सेप्शंस बोली कहू बुझेगा तापर जो आम नेक्स्ट क्वेश्चन हो कौन एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड यूजिंग द डैश ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडल करने आम तो को ब्लॉक यूज करूँ व्हिच ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लॉक दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स इज डैश द ब्लॉक दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स डैश सब आमर को ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट हुए सी हूँ आमर कौन फाइनाली ब्लॉक ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन माने कौन लास्ट क्वेश्चन पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड डैश बाय लाइन पाइथन प्रोग्राम आमर केमिति एग्जीक्यूट हुए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुए हाँ कि नहीं बुझेला आम कौन कौन कंप्लीट कले आम 1 to 100 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आम कंप्लीट कले आई होप आम जहाँ जहाँ डिस्कसन कले तुम तक भलसे बुझीपार ओके ये आम कौन कौन कंप्लीट कले चैप्टर गुड़ाक ये सब चैप्टर कंप्लीट कले कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी आउ स्टोरेज ता सहित नंबर सिस्टम कैरेक्टर एनकोडिंग जो आमर कौन कौन थिला आस्की थिला आउ यूनिकोड थिला ता सहित पाइथन बेसिक्स टोकेन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स ता सहित डेटा टाइप ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट्स लूप्स स्ट्रिंग फंक्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग आई होप ये क्वेश्चन गुड़ाक तुम कौन आगे भलसे प्रिपेयर कर गुड़ाक तुम कौन आसबार चांसेस थाए यूनिट टेस्ट हाफ इयरली एग्जाम ता सहित एनुअल एग्जाम एज वेल एज योर भाइवा MCQs ओके ये सब गुड़ाक तुम भलसे पढ़ो ताकू प्रॉपर्ली रिविजन कर ओके बुझिपार कि नहीं जदि बुझिपार ताहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए गुड डे टेक केयर ऑल।